Dear students, this is question number 10. It's exercise 1B, book 4, 8th edition. So here it is given if A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, B is 2, 4, 6 and 8 and C is 1, 3, 5, 7. List the elements of the following. Part 1 is A union B union C. So I have written over here A union B. So I am writing the elements of A 1, 2, 3, 4 and 5 union and the elements of set B 2, 4, 6 and 8. So now I am writing A union B. दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स उनको हम एक सेट बना के लिख देंगे. 1 आई एम राइटिंग इन सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Now A union B हमने find out कर लिया. Now we have to find out A union B union C. A union B union C is equals to A union B के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और C के हैं 1, 3, 5, 7. दोनों इस सेट को और इस सेट को मिला के हमें एक सेट बनाना है, उसका फाइनल आंसर बनाना है. सो आई एम राइटिंग इन सीक्वेंस 1, 2, 3, then 4, then 5, 6, 7 and 8. So we have done this. Now move to the part 2. This is A union C intersection B. So now we have to find out A union C. The elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5 और intersection की sign, and then C. The elements of C are 1, 3, 5 and 7. ठीक है. A union C means हमें सारे elements कलेक्ट करके इसमें लिख देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज A यूनियन C के लिए हमने बनाया है A union C. Sorry, I have written intersection over here and the question is A union C intersection B. ठीक है. This is question. So we have to find out the union over here. Union में हमें दोनों सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखना है. A union C is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 7 and A union C intersection B means 1, 2, 3, 4, 5, 7 and then intersection B के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 and 8. अब इंटरसेक्शन मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं. A यूनियन C इंटरसेक्शन B. सो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें 2 and 4 and 6 and 8 नहीं है. 2 and 4. Only 2 and 4 are the common elements. So we have done part A. Now move to part B. What are the elements over here? D. D is given. Set D has the elements A, B, C and D. Set E has the element A, B, C. Set F has the element A and E. Now find out, we have to find D intersection E union F. सबसे पहले हम E union F find out करेंगे. So E union F is equals to elements of set E are A, B, C. And the elements of set F are A and E. So अब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करके लिख देना है. A, B, C and E. Now D intersection E union F. D के एलिमेंट्स है A, B, C, D. A, B, C, D intersection E union F के elements है A, B, C and E. So what are the common? दोनों के common elements हमें देखने हैं. Common elements हैं A, B and C. So A, B and C. This is our final answer. So we have done question number 10. Thanks for watching my video.